start giving output. So वो जो आपका कट ऑफ आपको डेट बोलता हूँ, दैट इज द कट ऑफ फॉर ट्रेनिंग। इनफैक्ट जब मैं आपको टेक जार्गन्स के बारे में बात करूंगा ना, आई विल टेल यू वो ट्रेनिंग कैसे होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द वे यू ट्रेन अ किड। ओके, सो बिकॉज एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सिर्फ कैसे
Okay, this is एक बार you can check if people are able to see or not. So while it Just share the screen also. just a moment, yeah, I will do that. Yes, sir. You are able to see? Perfect. Perfect. Okay. Okay, what does it say? Document does not explicitly discuss the impact of GST on specific sector or implication for the state of Rajasthan. So नहीं है, but okay. सर ये समरी है जीएसटी की हिस्ट्री बता रहा है हाँ. ये जो डॉक्यूमेंट है ये हाँ. सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है Okay. इसलिए इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है Okay, fair. But essentially what I want to say is कि कोई भी document होगी, let's say it's a 200 page document, उसको read करके properly critically analyze करना, especially in let's say you have cases, I'm assuming कि आपके पास आते होंगे जहाँ पे एक company के पूरे books पढ़ने हैं and उसमें आपको you have to check for legal compliances, is it accurate or not, is there some fraud that has been put up, so those things what you can ideally do is you can train a GPT for yourself, and I'll show you how you can do that as well, and use it to save time on the entire reading piece of it, and at least get a gist of it initially, and then go deep dive to which particular area, because not each part of the entire document is something that is useful, right? So specific areas where you can focus, specific questions you can ask, and that entire makes the entire task of reading a more interactive thing rather than just one way, is where you're just reading and absorbing. You can also start working with it quickly. तो इसके लिए एक और जो वेरी it's a very powerful tool called Humata. Okay, so यहाँ पे क्या है कि it does the job in a very similar way, but once you start interacting with it, you'll see the difference, little bit of difference which is there. So again, let me so यहाँ पे मैंने कुछ documents already upload कर रखा है, right? Let me chat with any one of them. So what it does is, unlike ChatGPT, where you just uploaded a document and then उसके बाद you are asking questions to it, यहाँ पे the big difference is that in this screen you have two areas, right? One area is a chat box where you can ask questions. One area is the entire document itself. It could be any document. मैंने ये डाला, it could be XYZ, anything which is important to you, and any PDF, so to say, right? What you can do is here you can ask your questions and let's see what it does. Please tell me what the document is about. Imagine that I am a 10-year-old person. Okay. So what you are trying to do is you are ensuring कि जो भी technicality, this is a research paper, right? It's a computer science research paper. आपने ये किया कि आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि all the technicality is gone. मैं 10 साल का हूँ, मुझे नहीं पता कुछ कंप्यूटर साइंस, बेसिक भाषा में बताओ क्या है. This paper is about a new type of computer model called the transformer. It is the T of ChatGPT, by the way. So it's really good at translating languages and understanding the order of words in the sentence. The author explains how the transformer works and why it's better than other models. They also talk about how it can be used for things like understanding the meaning of sentences and even writing code. Okay. Which part of the document explains the process of transformer? Quote the exact words. होता है ना कई बार किसी डॉक्यूमेंट का आपको कुछ हिस्सा चाहिए होता है, when you want to quote it. So let's see. So this is one tool, and you will have many to आज के दिन में तो you'll find many such tools. It's essentially called PDF readers. So what it is doing is कि जैसे ही आपने बोला ये, it is giving you link also. These are the areas जहाँ पे उस particular area को explain किया गया है. So number 4 वो already आपको ले आया. If you click on number 3 here, it will take you to exact, उसने highlight कर देगी ये सारे area में explanation की गई है उस particular चीज की. So imagine that you have a GST based document here, or a document related to tax consulting, then you can specifically get that particular area so that your time is saved in a significant way. Right? So this is then tool number 2.
The next one, डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है क्या? sorry, स्कैन डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है क्या? हाँ हाँ, as long as it's a PDF, उसका text legible है तो it can. Okay. Now after this, another very useful tool, again when it comes to talking about time saving, which is the most critical thing for us because we are always short of time. So this is a document this is a tool which I use almost every day. Essentially, what it does is takes a long video and you just have to put the link of it and it will give you a summary. So let's give an example. Let's say video summary in text. Correct. So let's say YouTube podcast. अभी recently, let's say Elon Musk की podcast आई थी कुछ, and podcast typically 2-3 घंटे की होती है, and working professionals don't have time. ये 2 घंटा 16 मिनट का है, right? So what I will do is I'll just click this particular link. So this is the video. I don't even have to watch anything in this video. What I will do is I'll just quickly come to the summarizing tool and just click the link. You have the entire summary. So exactly what is happening between 0 to 1 hour, 1 to 2 hour. If you want more detailed breakdown, अच्छा sorry, मेरे इसी से आवाज आ okay. Yeah, so you can look at it every 5 minute के duration में क्या बात हुई थी, and obviously the interesting thing that you can do is you can just, let's say, copy this entire piece because this is a little too much to read, and you can go back to Gemini or ChatGPT and you can ask, let's say free version में देखते हैं, please summarize this into a table with clear classification of discussion topics, because typically एक podcast में अलग चीज़ों की बात होती है. So आपने उसको बोला कि आपने chunk ले लिया, you said कि it's a 2 hour long conversation, so why don't you just, because that's the whole power it has, no? It can just absorb huge amount of information which human beings cannot and process it instantly. So that is the advantage which it is giving you. So it has been able to read the entire thing and then give you कि ये these are the main topics. Timestamp भी है यहाँ पे, okay, but these are the core topics. So you essentially know कि conversation किस बारे में था. मान लीजिए कोई 3 घंटे का conference है, so you essentially know कि क्या है. Then obviously you can ask further question. और deep dive आपको करना है कि वहाँ पे क्या है. Translate this in Hindi. Let's say you want to, and it can translate today in almost all the languages. So you can get a translation in Hindi also. And it's almost near human level accuracy by now. Okay, so this is you can do so much more with it. It's like, for example, one of the interesting thing in ChatGPT itself. Let's say provide a visual, because human being, many of us are visual creatures. Provide a visual summary of this article जो मैंने paste किया था. Like there's so much stuff, but I want to look at it visually. Let's see what it does. So now it's trying to create an image. It will try some sort of infographic. Okay. But again, it's good to understand huge quantity of information through this visual. Any of you use mind maps? कभी आप लोगों ने use किया है mind mapping tools वगैरह? Concept को breaking it down into small brackets so that it's easy to see in a chart format. अच्छा, some content policy, because Elon Musk is involved, it's not able to. But otherwise, you will get visual summary of most stuff. This is more person based, so नहीं होगा. Create a mind map of this discussion. Again, very useful in, let's say, understanding complex cases. Some client of yours has come up with this huge, information, and you want to just first start by understanding the entire thing. So normally क्या हम करते हैं? पढ़ने के बाद दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं. यहाँ पे आप पहले ही पिक्चर बना लो, उसके बाद. So now it is putting it, and let's see. So it is putting it into
topics and subtopics, so to say, which makes the entire thing. Can you please create a visual mind map out of it? Little funny thing, funny detail, but just recently, yesterday I was listening to an interview of a OpenAI engineer, and he was saying कि उनको भी नहीं पता है क्यों, but the moment you add a smiley at the end of your message, the quality just goes up tremendously. It's very strange, but it happens. So, and because it came from the person who is building this tool, so I'm assuming that they're saying the right thing. So, she instantly start creating the image without any further. So different ways. I mean, in fact, I can go on and on for the next 2-3 hours about different ways you can just use ChatGPT itself. But there are other things also I want you to use. It's again, वहाँ पे it's some content restriction. Just I'll say just share a reference and general mind map visual for me to understand what mind maps are about. So there are different ways in which we can use it. Okay, and in fact, very interesting way to use ChatGPT is you can ask ChatGPT, how can I use you? What are the tips that you have for me to give better answers? Because essentially it's a very intelligent tool or very intelligent, I don't know what to call it now, because itna zyada main use karta hu, I almost have started feeling that it's an actual person or something, because that's the kind of feeling you get. So now इसके अलावा, so I showed you this tool for reading PDF, and then some ways to utilize power ChatGPT in a more powerful format. एक और, before I move to other tools, there is another very powerful use to use ChatGPT. It is by making it an expert. Okay, so I'll give you an example. So this is a tool which I have built inside ChatGPT. It's called Custom GPT. I'm calling it the finance wizard. And what I have done is, उसको मैंने instruction दे रखा है that whatever question is being asked to you, you assume that you are a finance wizard, you are a financial expert, you are CFA and CA and tax and all rolled into one, and each answer has to come from that place. So now here, whatever I ask you, so yeah, कुछ basic questions यहाँ डाले already. How can I improve this financial model? So you can, let's say, upload a financial model and it will try to improve it for you. Help me analyze this investment returns. What does financial data include? Explain this financial forecasting model. So these kind of things, you can ask more questions to it as well. It will always answer like, like for example, let's say, take example of the Indian budget. So browse the internet and study the Indian study the latest India budget, and tell me your recommendations from for from policy perspective. Okay. So now it will first go look at the budget, and then it is doing 2023 budget. Anyways, you can ask you for 2024, but idea is that it will look at this budget and then try to see from the finance perspective what is there that it can give you an information of. So इसमें from your perspective, what you can do is you can go and clear. It is looking at some things, and right, what you can do is explore GPT नाम की option होती है. So you go there, it's still going on typing. So I'll just maybe go to some other area and show you. ये explore GPT करके एक option आती है. यहाँ पे I will highly recommend you to use this. यहाँ पे you can create GPTs. So you go to create, and यहाँ पे you ask it कि what kind of personality it should have. You can also upload some documents here. So यहाँ पे upload आप file कर दो, जो भी आपके relevant file है. मान लीजिए आपने taxation से जुड़ी सारी files आपने upload कर दी. एक या बहुत सारी? बहुत सारी. It's up to you. And so what it will eventually do is you will essentially end up creating a virtual assistant, which is essentially coming at $20 per month, which is like 2000 रुपए per month में आपको एक बहुत ही highly qualified professional आपका as a co-worker मिल गया आपको in a way, right? And the accuracy, obviously, the more you interact with it, the more it learns, the better it gets. So that's how it works. Okay. This one, for those of you who ever have to make presentations, आपके लिए very good news. You can automate entire presentations. So let's say I start with a blank slate, and let's say I want to generate a presentation. This is
document or a web page, and अभी ये Gamma app में हो रहा, but I think what Google is rolling out, Google slide. In fact, 2-3 दिन से आया है, just super latest. I'll show you that also. So let's say, give me one prompt. क्या presentation बनाना चाहते हैं आप? It could be anything. Presentation to explain section 43 capital B 43B bracket में small h small h. Okay. small h अच्छा, small h of income tax act of income tax. 1961 ठीक है, इसी से ले लेगा इंडिया. ठीक है, okay. So एक तो I will ask this one and it will always be good, but let's see इसका basic आपको बता दूं how does it work. So it is telling you ये क्या बनाएगा. उसने बोला एक तो मैं explain करूंगा, फिर eligibility criteria बताऊंगा, फिर type of expenses covered बताऊंगा, limitation बताऊंगा, case law बताऊंगा, conclusion बताऊंगा, and you can have it brief, medium, detailed, right? You can have 3 version of it. Now once I think net थोड़ा slow है, otherwise और भी speed में होता है. So you can have different designs, and this is like super modern design and everything. So you can choose all these different designs. So the time we had to waste on this entire designing, that is almost like sort of gone now. So now it is generating. Sometimes it is so fast, sometimes it is so fast that you can actually start presenting while it is generating. So you can start presenting also. Yeah, you can. So while it is generating, it is giving you everything, you can start presenting. ये आपका फोटो आ गया कैरिकेचर आप Okay. So this is slide number 2, explanation of the provision, legal jargon, financial implication. You can edit also. Yeah, you can edit every section. You can edit. Yeah. So एक बार पूरा बना ले, then let's go and we'll see. PowerPoint. Maximum reduction 50K. Is it accurate by the way? Yeah, Pretty accurate. Huh? I would not know, frankly speaking. You guys are the experts. So you can go and edit here. You can go and edit different type table वगैरह आप कर सकते हो. So all kind of permutation. This is an app called Gamma. Gamma app. Yes. नहीं अलग है. This is different. जैसे मैंने Humata दिखाया था वो एकदम अलग था. इसे partially free. जैसे अभी तो मैं free version यूज कर रहा हूँ. But अगर आपको professional यूज करना है, like you're using it a lot, daily like मान लीजिए आप 1-2 घंटे यूज करेंगे तब शायद पेड होगा. But अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट है तो it's free. So this is for presentations. Then let's come to, I was talking about something which Google has introduced a couple of days back. So this is what it is. Google के हर document में now you'll have this symbol. This symbol represents AI, by the way. You should know. Okay, this is the symbol of AI. This one. So here what it is showing. Yeah, sure. One car 7 to 7. एक बार वो प्लीज किसी गेट के बाहर खड़ी 7 to 7. Thank you. Sorry. No worries. So this is basic core Google Doc. You have opened it, and here पहले ये चीजें नहीं आती थी. Now it has started coming. This is now publicly rolled out, I think. So आप सबके पास available होगी. This is obviously free. So हाँ. So this is docs.new, no? नहीं लेकिन लैब्स पे सब्सक्राइब करने पे तो Sorry. गूगल लैब्स पे सब्सक्राइब करने पे तो I think this has been publicly launched now, generally for everyone, no? I would not be aware then. मतलब मेरा impression था कि अब सबके लिए available हो गई है. मेल पे भी Oh, is it? Okay, got it. Okay, could be. But anyway, see, अगर अभी नहीं आई तो 1 महीने बाद आ जाएगी, because Google has to do this. Otherwise, how will it retain you guys? So you will start with essentially clicking on Help Me Write. So just ask it just like ChatGPT को आप पूछते हैं. Let's say
write a report on tax compliances for general consumer in India, right? So you do this and it starts writing, and obviously you can edit, change. So similar to Chat GPT. So basically Chat GPT and ये जो tool है ना, this is called Copilot. So Copilot is now coming in Google, every tool of Google, Microsoft के सारे tool में आना शुरू हो गया. Eventually PowerPoint, Excel सब में ही आएगी. It's just a matter of few months or days, you can say. Copilot means a chatbot. Copilot means like it is working with you. Okay. So that's the general name which it has become a norm now. It's a copilot. Like you are working and साथ में it's there with you to work with you. So यहाँ पे आप इसको insert कर सकते हो. And इसको obviously refine वगैरह करना है तो you can again go here and just a moment. Okay. अच्छा ना यहाँ पे आना पड़ेगा आपको फिर. So you have click on this thing and you can start interacting with it. कि मेरे को और ये भी डाल दो. Please also add. उसने खुद भी कुछ सजेशन दे दिया. So vehicle, how often a vehicle tax is due? So let it carry on. So उसने बोला कि vehicle का भी उसको ऐड करना चाहिए इस रिपोर्ट में. It is basically सारे taxes का उसने बताया. पहले तो property as in still super early tool, but this is how your docs is going to look like in the next 1 month or so. So you'll always be working alongside a AI agent, which means all the more important कि अगर आपके day in day out अगर आप MS Word, MS Excel वगैरह यूज करते हो या Google Doc यूज करते हो, how do you interact with these tools to get the best out of them? So you have to start. Normally what I've seen is कि क्योंकि हमें Google यूज करने की इतनी आदत है ना, तो Google में हम क्वेश्चन पूछते हैं. Right, Google is a search engine. You ask a question to it. ये टॉपिक है. इनफैक्ट कई बार तो फुल सेंटेंस भी टाइप नहीं करते हो आप. यहाँ पे you'll have to understand that this is not a search engine. This is an LLM, large language model, जिसके पास it has the knowledge of the world. So treat it like a intelligent being. Treat it like a reasoning machine, so that you can get the best quality answer from it. So you have to be a little more. You have to imagine that you are talking to another person. As long as you have that in mind, you'll get good results. Okay, so a few more tools before we move to other aspects. So there's this क्योंकि हम Google search की बात कर रहे थे, you'll be very happy to know that there is finally a competitor of Google which has come. Surprisingly, this competition has been created by a very young Indian person called Arvind Srinivas. अभी 27-year-old है. And IIT Madras से he moved to US for his masters, and while उसके बाद he worked in OpenAI for some time, and then he created this tool which is now almost, for example, I prefer it more than Google now because it is just so much better. So, and I think going forward most of you will also start, अगर if you see the demo of this fully, you'll start using this tool. This is so much better than Google. So what it does is it basically combines ChatGPT and Google. That's the simplest way in which I can describe it. So this is a combination of a search engine and an LLM. Okay, so let's say, give me some prompt, anything that you will want to ask. So एक तो है कि आप Google जाते हो क्योंकि ChatGPT जाते हो. All I'm saying is कि यहाँ पे दोनों आपका एक साथ आ गया है. So moment you ask it something, it will give you a specific answer right away, and it will also give you different links. So let's do a demo first. Okay. What are some of the important books I must read if I have to qualify the CA exam? Also mention key summary of each of those books and tell me where to buy it the cheapest. Okay, then you do a copilot also here. So copilot से क्या होगा कि it will also put the LLM which is inside it. What is LLM? LLM is the engine which creates this ChatGPT kind of large language model, which is the AI bit of it, generative AI bit of it. So initially it was Google, but you have also added ChatGPT now by Copilot. Now once you ask it a question,
So now see the quality of the answer जो Google में आपको कभी नहीं मिल पाती थी. So it is telling you these are the okay accounting standard, corporate laws, auditing assurance by Surbi Bansal, financing reporting, etc. etc. ये सब These books are available for purchase on various online platforms. This cheapest may vary. So it is telling you इसको नहीं पता है exactly cheap कहाँ पे है. But at the same time, two very important things which Google does not do for you. One is it tells you further related questions. So typically, when you explore something, it's not one question and end. It is also telling you what are the best study material for CA exam, what are the most recommended book for CA exam, how can I find affordable study material for the CA exam. Let's click on this one. Let's say what it does. So what it does is कि normally क्या होता है ह्यूमन माइंड के केस में हमें लेजीनेस आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है. But this is one tool which is like you are starting a conversation, but it is helping you further that conversation. You can go deeper into it on because of its initiatives, and it is giving you all these links. इस लिंक में क्लिक करो, it works like Google. But rather than reading all this link, मुद्दे की बात यहाँ पे is written कि एक तो मेरिट ट्रेनिंग या Amazon and other वेबसाइट प्लेटफॉर्म कहाँ आपको अच्छा मटेरियल मिल सकता है. ICAI का कोई CDS पोर्टल है, CA टेस्ट सीरीज है, एंड इट इज टेलिंग यू कि जस्ट फॉर एग्जांपल ICAI का CDS पोर्टल है, वो यहाँ पे यू फर्स्ट आपको बताया क्या है, देन यू क्लिक ऑन इट, सो यू विल बी एबल टू गो टू द एग्जैक्ट पोर्टल. सो अगेन reducing your time, reducing your effort, just decrypting this entire knowledge world for you. This is different from ChatGPT. This is very different, but it is built using ChatGPT. It is built using ChatGPT. In fact, I'll show you something more, which again, as I was telling you, कि AI will become part of our everyday lingo in 2-3 years. So ये Perplexity Lab का playground है. So technology में आपको दो शब्द जाननी चाहिए अब right now, especially because the kind of times we're living in. One is called open source. आपने सुना है open source technology? Open source. OpenAI is different. OpenAI की story बड़ी interesting है. I'll tell you right after explaining what open source means. So software दो तरह के होते हैं. Open source software का मतलब ये होता है that you write the entire code of the software and you make it public, so that others can also read that code, learn from it, and also improve it. Because software का सबसे beautiful part है, you can always improve it. Because somebody's knowledge is there, you just add certain things, it becomes more sophisticated. So that's open source. For example, Linux operating system जो होती थी वो open source है. Windows is not. Windows का कोड किसी को नहीं पता, सिर्फ Microsoft को पता है. But Linux का कोड सबको पता है. So improvement open source से होती है, right? So आज के दिन में what's really happening is कि LLMs में OpenAI was essentially created by some of the technology experts in the Silicon Valley, like Elon Musk and Sam Altman and all that. Idea was कि they will create an open source technology. Reason why उसका नाम भी रखा OpenAI कि इसकी कोड होगा वो publicly हम available कराएंगे. But then while the research was going on, something they came to know, some realization struck, and they realized कि इसको open अगर छोड़ देंगे, it will be very dangerous for the society, because we have ended up creating something which is beyond what we had thought of. So they closed it up, but it was their decision. So Elon Musk ने company छोड़ दिया. So right now Elon Musk is not on the board of OpenAI, whereas he was the initial funder of OpenAI, because they have closed it. But आज के दिन में बहुत सारे OpenAI models, बहुत सारे open source LLM के मॉडल अभी हैं, और it is actually growing. So surprisingly, Mark Zuckerberg, founder of Facebook and now Instagram and all of that, जो उनकी उसके अंडर में आती है, they are creating a model called Llama. So अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सामने, this is a platform where you can chat with different kind of LLMs. One LLM is OpenAI का ChatGPT. There are many LLMs. सबसे बेस्ट आज के दिन में ChatGPT 4 है, most advanced in terms of training, in terms of output, but others are also closing in. So for example, here you will see that there are so many. So these are Perplexity, then Llama. Llama is a expansion of LLM. Llama belongs to Facebook. Surprisingly, जिसको हम मानते थे कि सबसे ज्यादा closed इंसान है, they have created an open AI. Then there is Mixtral, which is a team from France, very small group of people making this technology. And the question, why am I telling you all this? इससे आपका क्या लेना देना? Why it's very important for you to know this? What will happen is in the next 1 or 2 years, see, OpenAI is obviously has gone into the
प्रोडक्ट रूट, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया, नाउ इट इज गॉन इनटू कंप्लीटली पेड रूट. नाउ ये जो ओपन सोर्स LLMs हैं which is publicly available, now moment these keep getting better, अब just a matter of time, when it becomes equivalent to ChatGPT, तब क्या होगा ना, then each of you who run a company, what you can do is you can easily get somebody who understands little bit of technology to create an LLM which is specific to your company. So for example, you have a firm, you'll be able to create an LLM which is specific to your firm. उसके पास आपके firm का सारा data है, but it is personal property आपकी वो. Nobody knows outside, and you will get it for almost free because it's an open source software. आपने उसको training करनी है बस. Once you have trained it, all your employees, all of you will be able to interact with it and use it daily basis to improve your performance. And so it is essentially the way you are using emails today, the way you're using internet today. You are using a personal computer today, which has all your personal data. In the same way, you will have personal LLMs in just some time, maybe 1 year or 2 years at max. But that is something that is bound to happen. So again, one very important reason why you should be aware of this open source technologies and the development there, so that you can utilize it for your own personal benefit. There is one more platform. आप लोगों ने कोरा सुना होगा ना? कोरा यूज करते हैं आप लोग? QUORA कोरा करके है, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर आते हैं. The same company has also created this platform called POE, Platform for Open Exploration. यहाँ पे भी बहुत सारे LLM इन्होंने आपके लिए डाल रखा है, so that you can interact with it. So those of you who don't want to use paid ChatGPT, जो कि 2000 रुपए per month लगती है, you can come here and you can use GPT, Cloud, then Stable Diffusion, Llama, Mistral. These are all different LLMs. They do the same thing. They have basically, उनके पास पूरा world of information है, उसके basis intelligently वो आपके question को answer करती है. So this is again a platform. You can also create bots. So for example, this one is a programmer. So आप programmer हो तो ये program का expert है ये. ये कोई photo बनाता है. So click on it, it can create photos for you. Okay, so different kind of bots are there. So this is something again is like good for you to know. Any questions so far? These were most of the, I think, important work tools जो था that I have described. इसके बाद I wanted to take you on the why part of it, the journey part of it, the evolution part of it. As of now, any question that you have? So this was, I mean, so far it's a little serious. इसके बाद it will be more fun. What questions we should ask? How much time do we have? Accordingly, I'll flow. 40 minutes के राउंड है. Okay. So I mean, so far आप लोगों ने जो भी मैंने आपको डेमो दिखाया, this is all by the way, जो भी मैंने दिखाया पब्लिक डोमेन में. ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशलाइज तरीके से अलग से कोई टूल यूज करके दिखा रहा हूँ. आप भी, it's just a matter of learning. You can also do all of this, right? Yeah. So all of that. So basis that, now I will want to tell you a little. Let's go a little deeper into what this technology is all about. So one is thinking of this as some fancy tools आते ही रहते हैं. Photoshop होती है, Excel आती है, तो ये भी एक tool है. But what I am, and because I have been studying this almost for some 7-8 years now. मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, and around 2014-15 मेरी में वो travel बहुत होती थी मेरी. I was part of Wipro that point of time. I used to travel a lot, almost on a weekly basis. तो मैं बहुत पढ़ता था, and this is one area which got stuck with me. So I've read a lot about it. So I know maybe a little bit on the implication side of it. So I'll try to discuss that a little bit. This is one of my favorite authors, and ये साइंस फिक्शन लिखते हैं, and मुझे साइंस फिक्शन पढ़ने का बड़ा शौक है. I know it's a very niche genre, बहुत कम लोग साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, but साइंस फिक्शन is all about कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में स्टोरीज होती है, in simple words. तो इनका कहना था कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है ना, तो वो मैजिक की तरह दिखने लगती है. We feel it's magic, but it's not magic, it's just advanced technology. जहाँ तक मैंने देखा है अब तक, और जो predictions जो है, what AI is about to commit, it will always feel very, very magical, because we are talking about some very advanced technology. So a very interesting story which Arthur C. Clarke himself had written. There's a novel called Childhood's End. तो उस नॉवल में, and most of you will know कि ह्यूमन माइंड ऐसी होती है, स्टोरी ज्यादा समझती है. हम कई बार नंबर्स फैक्ट फिगर नहीं समझते, हमें स्टोरी ज्यादा समझ में आती है. तो आपको स्टोरी के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ.
नॉवल का प्लॉट एसेंशियली ये था कि वन फाइन डे एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आके वर्ल्ड के जो बेस्ट मेट्रो सिटीज होते हैं, मुंबई, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, सबके ऊपर एक आके स्पेसशिप डॉक कर जाती है, जैसे यहाँ पेरिस के ऊपर डॉक की हुई, राइट? एंड obviously it's an alien spaceship. It has come from outside. Nobody knows what it is, and everybody's in a deep shock. And then हफ्ते भर तो पहले वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आती वहां से, वो ऐसी लटकी की लटकी पड़ी, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. यहाँ से पीपल आर ट्राइंग टू सेंड सिग्नल्स टू इट, नो रिस्पॉन्स. somebody tries to destroy it by using bombs, वो bomb disappear हो जाता है, but they are not able to shake it. After 1 week, the ship decides to go to UN, United Nations in New York, and say this. दो चीजें कहती है वो. एक तो कहता है कि हम एक बहुत ही सुपीरियर इंटेलिजेंस है जो बहुत दूर गैलेक्सी में बसती है, हमको उन्होंने भेजा है अर्थ में, ओके? एंड भेज के उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ रहने के लिए, कुछ काम करने के लिए बोला. वो काम ये है कि एक तो है कि आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आज के बाद से कोई भी वॉर हम अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी तरह की वायलेंस किसी भी लिविंग बीइंग के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, आपके जितने न्यूक्लियर वेपन हम सबको उड़ा देंगे, एंड हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ले आएंगे. तो आज से जो भी लोकल गवर्नमेंट है सब खत्म, राइट? बट इसके बदले में हम आपको सपोर्ट पैकेज देंगे. वन इज कि आपको हमारी जो भी सुपीरियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब आपको हम दे देंगे राइट अवे. देन जो भी पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी, जो भी डिजीजेस हैं हम उसको एक दिन आज ही मिटा देंगे, आज के बाद से कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं. एंड सबको हम इनकम देंगे बेसिक लेवल का, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आप उससे आप अपना जिंदगी बिता सकते हो. सब चीजों का कॉस्ट बहुत कम कर देंगे, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो. सो रोटी कपड़ा मकान विल बी लाइक नेक्स्ट टू जीरो कॉस्ट, एंड यू विल हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग. आप कुछ भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू अलाइन विद द अबव जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वॉर नहीं करना है, वायलेंस नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं, वो करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगी. तो व्हेन दे मेड दिस अनाउंसमेंट, obviously it's a very big novel, कुछ 300 पेज की नॉवल है, बहुत ही अमेजिंग नॉवल है, आपको भी टाइम मिले तो पढ़ना. ये जब अनाउंसमेंट उन्होंने किया तो दो तरह का रिएक्शन आया लोगों का. वन वाज पैनिक कि भाई ये क्या हुआ, हमारी तो पूरी कंट्रोल ही चली गई. सो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग यू नो हु फेल्ट कि दिस इज कंप्लीटली नॉट फेयर, एंड द अदर वाज सेलिब्रेशन. पीपल जस्ट स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. नाउ कोइंसिडेंट, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद एआई. It's something which has come from, almost feels like it's come from outside, because as of now हमें यही पता था कि you know we are the only intelligent creatures in the planet, but suddenly we realized that we so let's go a little into this, you know, how did this happen, and ये जो reaction आ रहा है कहाँ से आ रहा है. Okay, so if you look at it, see, this was happening since quite a long time. हमारे बहुत जो पूर्वज थे उनके एंगल से ही, उनके इस टाइम से ही शुरू हो चुका था. It's just that we didn't know that we will end up in a time like this. So just think about, you know, the very first time when fire was discovered. You know, there's an amazing book called Sapiens written by Yuval Noah Harari. उस बुक का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर है जो कहता है कि हमने जब फायर को डिस्कवरी किया, फायर की वजह से हमने ये सीखा कि खाना पकाते कैसे हैं, और एक बार हमने जब खाना पकाना सीख लिया तो खाना को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो गया. तो जो पहले जो हमारी मोस्ट 80% एनर्जी खाना अब डाइजेस्ट करने में जो जाती थी कच्चा खाना खाने को, अब वो 80% बच गई. इट वेंट टू कॉग्निटिव टास्क. देन हम ब्रेन से रिलेटेड चीजों करने लगे, because now we were not worried about कि खाना पचेगा कैसे. तो जो एनर्जी, essentially we are energy creatures, no, फूड तो हम एनर्जी के लिए खाते हैं. हमारे एनर्जी की यूटिलाइजेशन खाना पचाने के लिए नहीं, जबकि कुछ सोचने के लिए शुरू हुआ. सो दैट वाज द फर्स्ट कॉग्निटिव रिवोल्यूशन. एंड उसी समय आप लोगों को ध्यान है, अगर आपने हिस्ट्री बुक पढ़ी होगी, व्हील का डिस्कवरी हुआ था उस समय. फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, बिकॉज वी हैड टाइम. तो इनिशियली व्हाट हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हंटर गैदर बोलते हैं. या तो हंटिंग करते थे, एनिमल मारते थे, या तो गैदरिंग करते थे, फ्रूट या बेरीज वगैरह को कलेक्ट करते थे. यही दो काम था. बट बिकॉज ऑफ फायर इट मूव्ड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू थिंकिंग, टू फार्मिंग, टू ऑर्गेनाइजिंग, राइट, टू स्ट्रेटेजाइजिंग, राइट. ट्राइब्स बनने शुरू हुए. देन वी स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन वन प्लेस. सो एंड वन मोर थिंग व्हिच हैपेंड वाज वी स्टार्टेड utilizing or manipulating energy. So fire was the first time that we utilized energy.
Agriculture was another way to utilize energy if you think about it. खाने में जो एनर्जी होती है, we started giving periodicity to it कि इस टाइम में बीज दबाएंगे, इस टाइम में फसल उगेगा, फिर हम खाएंगे, एनर्जी रेगुलेट करना शुरू हुआ. तो दिस इज द कनेक्शन इज विद एनर्जी. देन वी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ. बिकॉज पहले क्या था कि हमने कुछ लिखा बट पत्तों में लिखते थे. अब किसी और को कुछ बोलना, जैसे वेदा है, जो हमारे जो वेद है, उपनिषद है, वो सारे ओरल मौखिक तरीके से ट्रांसफर हुए थे, राइट? नॉलेज, स्मृति जो हम कहते हैं. तो जब प्रिंटिंग हुआ तो वी वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट एंड मास, बहुत ही बड़े मास में भेजने लगे. दिस वाज अगेन हमारी मेंटल एनर्जी टू बी कंजर्व्ड इनसाइड अ बुक. दैट अगेन सम बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. देन लेटेस्ट जो डिस्कवरी रही थी, विच वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से वी वर एबल टू मेक मशीन्स बनाए, तो इंडस्ट्री बननी शुरू हुई. अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो एज ऑफ नाउ हमारी जो वर्ल्ड है, सोसाइटी है, ऑल ऑफ अस, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर, दिस इज हाउ हिस्ट्री हैज बीन. एज थोड़ा टाइम जैसे जैसे बीतता गया, हम इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस जो करते गए धीरे धीरे धीरे. बट ऑल दैट प्रोग्रेस वाज ऑलवेज लिनियर. दिस इज अ लिनियर ग्राफ, नो? इट्स अ लिनियर ग्राफ. इनफैक्ट हमारा माइंड भी लिनियर है. वी ऑलवेज थिंक इन लिनियर टर्म्स. एक के बाद दो, दो के बाद तीन. This is how we think, right? But because you guys are finance professionals, you know that reality is not linear. Reality में कुछ जो चीजें हैं वो exponential होती हैं. One thing is compounding. Compounding is not linear, and human mind does not understand compounding. Reason why most people can't invest in a right way, right? So what's really happening is with computers and internet, and you can think of computer and internet as another way of conserving energy only. टेकिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपने जो डेमो में देखा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत एक सेकंड में कैसे पढ़ लिया उसने? हाउ डिड इट हैपन? दिस वाज अ वे ऑफ मैनिपुलेटिंग एनर्जी. इनफैक्ट आई विल गिव यू सम आइडिया ऑफ हाउ दिस हैपेंस. बट द कोर थिंग इज कि वी आर अगेन सीइंग अ वेरी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, जो अब हम इसको इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के नाम से बोलते हैं, वेयर आवर नॉलेज इज डबलिंग इन एवरी फ्यू years. So very simple way to understand this. इमेजिन एक इंसाइक्लोपीडिया की स्टैक है. एक बुक में 1900 से 1950 की नॉलेज पूरी एसिमुलेट हो गई. देन दूसरे बुक में 1950 टू 2000, मतलब 50 साल का नॉलेज एक बुक में आ गया. बट एज वी आर प्रोसीडिंग, एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट्स हैपनिंग इज 15 साल का नॉलेज एक बुक में, फिर 4 साल का नॉलेज एक बुक में, फिर 1 साल का नॉलेज एक बुक में. As in the amount of information which we are creating is becoming higher and higher and higher. Now we are coming to a stage जहाँ पे एक दिन का नॉलेज भी एक बुक में मुश्किल हो रहा है समाना, because we are creating so much knowledge, which is resulting into this. Okay, which is resulting into this. So now we are moving towards what we call an exponential curve of human civilization. Extremely important for all of you to know, because you are knowledge workers. That's the premise I began with. You deal in knowledge day in, day out. वो knowledge itself is exploding, right? So then every strategy which you make for your client, for your business, has to take this into consideration, that in an age of exponential knowledge, how do you approach, like how do you plan for a business? Like typically FMCG industry, we make a 3-year plan, then next quarter plan, and then a next year plan. So now the 3-year plan when you are making, now it has to include these exponential technologies. सो अगेन आज के दिन में एआई में 2 कैंप बटी हुई है, वेरी टेक टर्म. वन इज कॉल्ड ई एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन. सो वन कैंप इज सेइंग कि इस जो टेक्नोलॉजी जो है, इसको वी शुड प्रमोट इट, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट इट कैन रियली इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. एंड अदर इज सेइंग इसको वी हैव टू स्टॉप इट, पॉज इट, बिकॉज इट्स लिटिल टू डेंजरस. सेम एज दो स्टोरी जो आपको मैंने बताया था कि जो एलियन आए थे, पीपल वाज कि दिस इज वेरी बैड, डेंजरस, अदर वे लाइक दिस इज. सो वी डोंट नो फ्रैंकली व्हिच वे इट विल गो, बट इट्स गुड टू नो दैट दिस इज, ये जो ट्रैजेक्टरी है, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव अ कंट्रोल ओवर. जो एवोल्यूशन का पार्ट है, दिस इज गोइंग टू हैपन. नाउ इट्स अप टू अस हाउ वी रिस्पॉन्ड to it. Okay, so with this, I think we are in a good place to also sort of understand a little bit of this technology in simple language, so that we are all comfortable with it. The first concept which all of you should be aware of is one is AI, which we are talking about quite a lot. पिछले 2-3 साल से ये हो गई है. But
you should also know about what is AGI and what is ASI. Okay. So today we are in a technology which is called AI. Uh, Next will be AGI. So this is, I have taken a snapshot from the website of OpenAI. So हर कंपनी का एक विजन होता है, विजन मिशन जो होती है. So the vision of OpenAI and most other AI makers, आज के दिन में आप मार्क ज़करबर्ग की बात करें या इलॉन मस्क की बात करें, everybody is making LLMs. उनका जो बेसिक विजन है, it is to create an AGI. Everybody is trying to make an AGI, which is an artificial general intelligence. Okay. Now, what is an AGI? दो तरीके से let's understand this. One is this. Today we are sitting here, which is the world of narrow AI, which is dedicated to one task. So, for example, ChatGPT can chat with you. That another tool that I showed you, it could make a presentation for you, one task at a time. Then from here it will move to general AI, which is it will start performing like humans. So, for example, if you talk about me, I'm a parent, I'm a husband, I'm a FMCG personnel, I'm also into technology transformations. If I go to gym, I can also do exercises. I can do multiple things. I can drive a car and all of that. So I'm a generally intelligent person. जनरल है मेरा इंटेलिजेंस, राइट? जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, हर चीज के बारे में पता थोड़ा थोड़ा. We will move to an AI which is general, and typically it is being said that this will come around 2029 के around तक. So 5 years more. But is there a doubt that whether this will happen? Not really. It's just a matter of compute. It is going to happen. It's a trajectory जो it's like a train जो चल पड़ी है, रुकेगी नहीं. And from here we'll move to super AI, which is artificial super intelligence, which will again be much more advanced version. So okay, so there's this video which was there, which I think would be important for you to listen to, depending on how the net is. So this was the person who gave the term AGI. So we should know what this term means. Net thoda slow hai, so I might skip this also. So he is the person who named AGI AGI. Right? So pretty clear definition that whatever human beings can do, eventually it will. The training is all about that it can also do the same kind of things. And he essentially came up with the name. So that's the kind of world that we are moving to. So these terms, good to know what AGI is good. So AGI will be the most advanced version of AI that right now every tech company is building AGI. So that's there. Now, as I was telling you that what AI is essentially, ChatGPT kind of tool is, it's like a thinking machine, right? So how we have been able to create a thinking machine is through this technology called, I'll not spend too much time on it, but it's good to know these terms. Just like अभी www क्या होता है, search engine क्या होता है, basic हो गया. So in the same way we should know all of this. What is neural network? Neural network essentially ये जो in the entire field of computer sciences, it was realized कि it's very interesting to see how human brain works. Human brains में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्शन के इन्फॉर्मेशन फ्लो की वजह से डिसीजन मेकिंग होती है. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरी जिंदगी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनटेक करते हैं, उसको एसिमुलेट करते हैं एंड देन उसको इंटरप्रेट करते हैं. दिस इज व्हाट ह्यूमन ब्रेन, हाउ इट वर्क्स. So they decided, the engineers, computer engineers decided, कि why don't we use the same system? So replicating the way human brain works in a digital format, it's called neural network. Why neural? Neuron. Brain ka neuron, digital neuron is called neural network. So that's the essential way things work. And then machines, work in binary, 0 and 1. Binary code में machine काम करती है. But because once neural network was built, it was also realized that usko we should train it to function in basic language जो humans बोलते हैं, English, Hindi and all of that. अभी तो mostly English में होती है. So इसकी जो entire information जो है, it should be able to process using natural language itself. So reason why NLP is a word which is
hear it a lot in AI circles. NLP essentially is about neural network को train करना language के ऊपर, so that it can take input in language and give output in language. Okay. Then the third one, which is LLM, large language model. So ChatGPT is an example of it. Mistral is an example of it. इसमें क्या करते हैं? Basically, they do something called web scraping. So essentially, पूरे इंटरनेट जितना है उसमें बिलियंस ऑफ कई जीबी से बहुत ट्रिलियंस ऑफ जीबी में डेटा होती है, उसको उसमें रीड करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन बेसिस दैट रीडिंग इट इज देन ट्रेन्ड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग जो आपका टेस्टिंग था ना, एक लिमिट होती है इतना, एक पॉइंट के टाइम तक टेस्टिंग रोक देते हैं, उसका ट्रेनिंग रोक देते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग आउटपुट. रीजन व्हाई इट कीप्स गेटिंग बेटर, because the more you train it, the more data you feed it, the more refined the answers become. Okay, so as in a general layman term, knowing this is enough. Okay, good thing is, and this is something that you should tell your children, because I know कि 5 साल पहले एक वेव आई थी कि अपने सबको अपने बच्चों को कोडिंग सिखानी थी. So what will happen now is, see, I'll still say coding is very good to learn because coding helps you think analytically. Coding helps you think in a step-by-step way, which is great. But going forward, the most important coding language will be English or even Hindi, अगर हिंदी में LLM बननी शुरू हो गई, because NLP is being programmed such a way that it can understand human language. So essentially, जैसे मैंने जो ChatGPT को जो prompt दिया, there is a field coming called prompt engineering. How can you give good quality prompts? So it is in a way programming only. You're communicating with a computer. Programming, coding क्या होता है? Coding is a way of communicating with the computer. But पहले कुछ लोग कोडर होते थे, आज सब लोगों को कोडर बनना पड़ेगा because the technology has evolved in such a way. So आप सब लोगों को, you have to think like a coder. So that's the core message of this. 3 more important things, very important to understand. Machine learning, आप लोग, you must be hearing it all the time. So see, machine learning is largely statistics. आप सबने पढ़ी, essentially statistics. Okay, probability वगैरह use होती है इसमें. Idea is to make the machine get trained on a particular data. Reason why it's called machine learning. Machine को आप learning करवा रहे हो, give it a lot of data, train it on it. उसी में अगर किसी area को specifically train कराते हो, उसको deep learning बोलते हैं. NLP is an example of deep learning. आपने उसको सिर्फ language में train करा दिया, so English में आपने train कराया, तो English पे deep learning हो गई उसकी. Machine learning का एक subset हो गया deep learning. And जो the fourth term RLFH, full form तो आप रहने दीजिए, but it's very important for you to know what this is all about. So इसका full form होता है reinforcement learning with human feedback. And ये जो last में जो HF देख रहे हैं ना, this HF was the reason why AI became so smart. So HF is human feedback. तो जैसे फोटो आप देखो, like there's a mother. So think of, those of you who are parents. होता है क्या normally? How do you teach a kid? So your kid will tell you something. And अगर आपको लगता है वो appropriate, you say yes, you encourage that, you give gifts to the kid, if this is the right behavior you want. If it is wrong, you punish or you say no. This is exactly the same way in which machines are also trained. So data output comes. Normally training में आप जाओगे तो 2 output आती है. उसमें से computer will ask you which one is better. So you say, let's say left is better. So it will say, अच्छा ये left is better, so I will do more of left and do less of right. And it will keep iterating it. Only thing is you can do it in a infinite number of time, multiple iteration कर सकते हैं. So just as human being की training होती है, in the same way AI की भी training होती है. Reason why, just as human being generally intelligent है, आगे चल के AI will also be generally intelligent. And the moment you will fuse an LLM with a robot, you will have a walking robot which is as intelligent as you. So again, that is something which is not far future. This is just a matter of few years now. One more very important topic before I take you to some entertaining tools is this concept of diffusion. आप में से किसी ने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एक आइटम किसी लिक्विड डालते हैं किसी दूसरे लिक्विड में, तो धीरे धीरे डिफ्यूज करना शुरू हो जाता है, सब तरफ फैल जाता है. नाउ इस डिफ्यूजन को ह्यूमन फीडबैक के थ्रू तो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इमेज कैसे बन पाती है एआई में. शुरुआत में क्या हुआ, उसने कुछ क्रिएट किया, कुछ पिक्सेल्स, वो डिफ्यूज किया. The closure it was to the shape of a cat. आपने उसको बोला कि हाँ ये वाला closure to cat है, ये closure to cat है, करते 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 eventually it ends up becoming a cat. So इसको AI में stable diffusion बोलते हैं. So it's exactly the same process, just a series of probabilities कि
एक स्टेप के बाद दूसरा में 2 डायरेक्शन लिया, आपने उसको बोला नहीं ये पहला नहीं दूसरा लो, फिर दूसरा में फिर 2 डायरेक्शन लिया, उन्होंने यू केप्ट गाइडिंग इट टुवर्ड्स द राइट आउटपुट, यू डिड इट वंस बट इट लर्न इट फॉर लाइफ। तो अब हर बार वो उसको कैट के लिए अब सिखाना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में लाखों इमेज ऑफ कैट, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट में कैट बहुत पॉपुलर होता है, कैट की इमेजेस बहुत ज्यादा ट्रेन होती है, तो उससे कैट की इमेजेस के ऊपर से ट्रेनिंग शुरू हुई थी इसकी। सो नाउ इट हैज लर्नड इट वंस, तो अब इट विल रिमेंबर इट फॉरएवर, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। सो विद दिस आई विल टेक यू थ्रू some fun tools which I'll recommend कि आपने बच्चों के साथ try करो, and I think for you also this could be a gateway to AI, because you know it's always good to start with fun things, because वो entertainment type की feel होती है. So some of the fun tools, the first one is image generation. So just see the kind of improvement which image generation has seen in the last couple of years. Okay, so this is a tool called Mid Journey, which is the most, जैसे LLM में Chat GPT होती है most advanced tool, उसी तरीके से इमेज जनरेटर में मिड जर्नी नाम की टूल है. You'll be surprised, it's made by some 2-3 people only, just 2-3 people का टीम, उन्होंने they have been able to crack this technology. तो मार्च 2022 में ये आप बोलते थे कि मेक अ लेडी सिटिंग विद अ कार, तो ये इमेज आती थी. देन अप्रैल में ऐसा हो गया, जून में ऐसा हुआ, नवंबर ऐसा, मार्च ऐसा, जून ऐसा, दिसंबर में ये हाल है कि यू कांट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रियलिटी. एज गुड एज अ प्रोफेशनल फोटो नो. इट टुक हाउ मच, 22 से 23. क्यों हो पा रहा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी entered that exponential curve of technology, जो मैं आपको ग्राफ दिखाया था, कि अब जो है हमारा नॉर्मल लिनियर माइंड नहीं समझ पाएगा, बिकॉज हम लिनियर सोचते हैं, टेक्नोलॉजी हो जा चुकी है एक्सपोनेंशियल. तो आपको जो भी मैजिकल लग रहा है, जो भी अविश्वसनीय लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है बिकॉज आपका माइंड लिनियर है. जैसे कंपाउंडिंग समझ में नहीं आती, इसी तरह से अब AI मोस्ट प्रॉब्ली समझ में नहीं आएगी. आने वाले जो भी महीनों में जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, एंड दिस ईयर यू विल फाइंड many अमेजिंग थिंग्स विल कम. So it will not. In fact, I will show you right now, some more tools which will make it clear to you what I'm saying. So all of these images I have generated it. मैं time बचाने के लिए मैंने जैसे यहाँ फोटो डाल दिया, but I have generated it in 1 to 2 seconds each using text. Okay, so you can utilize AI to not just make photos but also different kind of. Sorry. एक बना के दिखाओ ना. Yeah, I will बनाऊंगा, बट पहले मैं आपको रेंज दिखा दूं, मतलब क्या क्या पॉसिबल है. है ना? So this kind of images you can make, all kinds, like this is all AI generated images, and all of it took 1 second, 2 second, 3 second max. Now look at this. I started with cartoon, but I'm moving towards real. This is not a real image. ऐसा कोई रूम नहीं एग्जिस्ट करता है. This is interior design, right? Then you can use AI for making comics. You can use AI for making this kind of cinematic images. AI for making photos of personalities. This is Mirza Ghalib, Rani Lakshmibai, B.R. Ambedkar. Imagination of that. Making this kind of aesthetic images. I used one use case. I'm very fond of making rangoli, so I made a rangoli of a book, and then I actually made a real rangoli. So utilizing AI. So this is AI. This is me. So you can obviously make images of cats using AI. And then we are also now moving to this direction, right? Can you really think that this is an AI generated images? I sent it to many of my friends. They were just not able to figure it out. If you look deeper, you will realize, for example, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखा है, कुछ आप डिटेल में देखोगे तो मुश्किल आपको दिख जाएगी कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, but it's almost difficult to interpret. अब ये इमेज देखो, like this is a huge danger to the banking industry. KYC की क्या रेलेवेंस रह गई बताइए? This is almost a KYC image. So how will you know that this is a real KYC or just a AI based, जिसको हम deep fake बोल रहे हैं, right? Deep fake is a big problem, right? So obviously we'll find some solutions to it, but this is where the technology has already reached. Now it's only going to get better, but will it get better in a linear way? No, it will get better in an exponential way. It will get so good that you'll be surprised ये कैसे हो गया, right? So I'll give you some demo of some of the tools which are there. So let's start with one tool which is there in Chat GPT itself called DALI. Okay, sure. Yeah. But you can share in हाँ तो हाँ WhatsApp पे. These are all the tools. So, सर YouTube पे लाइव है, वहाँ से
Okay, so these are the tools. Shall I move? Okay, so the first tool which I will show you is one you can use using ChatGPT itself. Create an image of a street near Hawa Mahal in Jaipur in style of street photographer. Okay, in style of a street photographer, of a professional street photographer. Make it photorealistic, taken from a DSLR camera, cinematic. What else you want? एस्पेक्ट रेशियो साइज वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे AR एस्पेक्ट रेशियो इसका आप 4:5 करना चाहते हो या 16:9 करना चाहते हो, सिनेमैटिक इफेक्ट आएगी। वो तो खैर डिटेल्स हो गया, लेट्स से ये नहीं डालते, जस्ट बेसिक सिंपल भाषा में डालते हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स। सो चैट जीपीटी में देयर इज अ टूल कॉल्ड डैली व्हिच मेक्स इमेजेस। या How should we start using this ChatGPT or AI? I mean, in day-to-day life, हाँ। like in emailing or in drafting. Okay. What should we use first, and how should we start using this software from this new machine we should go through? Okay. So see, the best way which I had told earlier was just ask ChatGPT only. मैं आपको कैसे यूज करूँ? And उसको आप ये बोलो कि मैं, and you can type in Hindi also, right? And you can pretty much explain in whatever language you want. So you can ask that, imagine that I am somebody who is very new to AI, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे step by step, let's do this, let's give a demo. Imagine हवामहल की तो कॉपी कर सकता है ये क्या, सॉरी, हवामहल की बता भी तो सकता है। सॉरी, हवा महल क्या? सर वो वहां से कॉपी कर किया होगा हवा महल की पर ये generated नहीं दिस इज नॉट एन एक्चुअल इमेज। ये उसके पास डेटा था, उस डेटा से उसने डिफ्यूजन मॉडल के थ्रू, एआई इमेज डिफ्यूजन से बनती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू उसने ये बना दिया। एंड बाय द वे, ये जो मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ ना, ये सेकंड रेटेड टूल है। मिड जर्नी की इमेजेस तो ऑब्वियसली इट्स लाइक, And एक और है कि आप copy भी कर सकते हो, कोई उसमें वो tool नहीं है। हाँ, जैसे हाँ। बाकी में होता है ना कि आपको Correct. copy करनी, copyright यहाँ कॉपीराइट नहीं है, दिस इज योर इमेज। आप use कर, क्योंकि आपने जनरेट किया तो आपकी इमेज है, तो आप अपनी किसी भी चीज पे डाल सकते हो उसको। करेक्ट। जैसे ज्यादातर लोग अभी यूज कर रहे हैं वो एग्जांपल दे सकते हैं कि फैमिली इनविटेशन में ब्राइडल या करेक्ट। बना लिया अपना। In fact, I'll just show, if I have it, I'll show you. हाँ, ये मेरे एक फ्रेंड का कोई अभी उसने घर खरीदा, तो उसने इनवाइट भेजना था लोगों को, so he asked me कि can you give me some image which can really help me make that invitation card. I said why not? So this is the result which came. So उसने ये भेजा था, this is my friend and his family, and then I made a cartoon out of it. शुरू में गड़बड़ आ रहा था कि there's something wrong, then I kept improving it. हमेशा 3 बच्चे Yeah, I know. So then I improved it. Then eventually used this one in his invitation card and sort of. So, and see what I did. I have text you in WhatsApp. Huh. Can you create a certificate? Certificate. Okay. So I'll use it in. No, I have allocated. Acha. Okay. Huh. Okay. Acha, like this. Okay. Just read what I have. I read it. Just read for the audience. Acha, read for the audience. Okay. Create a digital thanks certificate to Shabbir Haider for delivering about AI on the platform of tax consultant on Saturday 10 February. Thank you so much. So yeah, this is and अब ये तो कोई इमेज के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त की फोटो यहाँ डाली and मैंने उसको बोला your pixel style, sorry, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया make a pixel style. So इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पिक्सर नाम की कोई चीज होती है, पिक्सर स्टूडियोज होती है ना जो इस तरह की फोटो बनाती है। इंडियन 35-year-old फादर, 30-year-old मदर, मोटा मोटा 2 लाइन ही तो है, क्या है बताइए, इट्स जस्ट अ कपल ऑफ लाइंस। नो, इट वाज एबल टू मेक दिस, then I was able to refine it to this and this. So I'm not saying कि there's some rocket science involved. यहाँ
there's no coding involved. You don't have to take a course or something. क्लासरूम की बनाओ ना कि इतने लोग बैठे हैं Okay, let's try. हाँ, why not? हाँ, yeah, let's try. तो इसमें दो ऑप्शन है. देखिए, एक क्या होगा कि one is आप आगे हो सर आपकी वजह नहीं, इसमें I'll tell you something very interesting जो चैट जीपीटी के पेड वर्जन में आपको मिलती है ना, आगे चल के बहुत सारे it will become a common tool only. So this में there is an option called camera, so you can click photo here. So जैसे मैंने अभी मान लीजिए फोटो किया है ना, so I can click photo for everyone. उसको अपलोड करके I will say कि make a cartoon version of this or something. So let's try to do that. Make a cartoon version of this image. Okay, so may not be too accurate, but still let's see how it happens. So इसको मुझे refresh करना पड़ेगा. It is right now creating an image. One more interesting thing which I do with my kid, you can actually talk to ChatGPT. Very few people are aware of this. You can, and it's very good quality conversation. So let's see. I just ये image यहाँ आ गई. Let me show this to you. And I think this is a good way to learn also because it's fun है ना, तो आपको मजा भी आ रहा है, आप सीख भी ले रहे हो चीजों को. So that's a good use. So cartoon of conference room देखिए कैसा है. Obviously I can refine it. अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन डाला था. I can say it is India, Jaipur and all that. Yeah. So this is one use case. And obviously imagine कि आप कहीं गए हो, आपको कुछ sign board वगैरह है and all that. You can just easily click and okay. दूसरा which is very important. So there is a tab here called headphones. So once you click this, so what you can do is you can click on this. Okay, यहाँ अच्छा मैं पहली बार करूँ. हाँ, okay. So ऐसा image आता है यहाँ पे. I'll just stand up and show. So what you can do is यहाँ पे if you can click no. अच्छा अभी ये भी लोड हो रहा है. Just a minute. So you can click it and almost like walkie talkie होती है ना कि यहाँ पे you say something. It will respond to you in the language of your choice. So my I have a daughter 3.5-year-old. वो उसको ChatGPT मुझे ड्रैगन की कहानी सुनाओ. So it will start. Let's try. Sorry. जैसे ब्लाइंड पर्सन की कोई इमेज है बहुत सारी. हाँ. इसमें अपने को कि इसमें मोदी जी की फोटो कहाँ पे है, इसको रीड करेगी. अच्छा. रीड कर लेती है. वो तो आपको अगर एक फोल्डर वगैरह आप उसको दे रहे हो तो गूगल में आपका हो जाएगा. आपको अपलोड अभी तो इसमें अपलोड करना पड़ेगा, बट उसके लिए वो दूसरी एप्लीकेशन है. बट हाँ, कोई ना कोई बना ही देगा उसको. उस ग्रुप फोटो में एक ढूंढना है तो वो आई थिंक गूगल फोटोज में ऑलरेडी है. गूगल फोटोज में ऑलरेडी आप सर्च कर सकते हो. जैसे आपके पूरे एल्बम में ना आप सर्च करोगे, मान लो लेट्स से स्ट्रीट, तो स्ट्रीट से जो फोटो सारी लिस्ट हो जाती है, वो तो है. अभी यहाँ नेट स्लो है, बट एसेंशियली यू कैन टॉक टू इट. यू कैन क्लिक एंड टॉक एंड हैव अ लाइक अ कार वार कुछ चल रहे हो कुछ अलेक्सा की तरह, बट वेरी इंटेलिजेंट. वेरी इंटेलिजेंट. अलेक्सा इज सुपर डम, राइट? थोड़े टाइम में कुछ नहीं आंसर करवाती. दिस इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, सो व्हाट अदर टूल व्हिच आई हैड टू शो यू. सो ये तो अभी आपने देखा इमेज, बट द सरप्राइजिंग एंड दिस इज वेयर द जो मैं बोल रहा हूँ ना एक्सपोनेंशियल वाली बात, चीजें बहुत मैजिकल हो जाएंगी, यकीन नहीं होगा अभी क्या हो रहा है. सो दोस थिंग्स विल स्टार्ट. So this is a tool through which you can make videos. Okay, so let's say show a sunrise in the street of Jaipur near Amer Fort, walking elephant also with many camels. So I don't know मेरा इसका भी कर पाएगा कि नहीं, बिकॉज़ इसमें दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टूल लिटिल बिट. मैंने उसका पेड वर्जन नहीं ले रखा है, बट लेट्स सी. अगर बन गया तो बन गया. अदरवाइज दिस आर सम ऑफ द वीडियोस व्हिच आई हैव क्रिएटेड. अच्छा ये बन रहा है. ओके, सो दे गिव यू सम फ्री वर्जन सो दैट यू कैन एटलीस्ट यूज. सो दिस आर फ्रॉम सम आई जस्ट, जैसे मैंने शाहरुख खान की फोटो डाल दी कि भाई सॉरी शाहरुख खान की, बस मैंने बोल दिया कि एक इमेज बना दो उसकी यहाँ से लेके वो कल हो ना हो वाली, या आप चाचा चौधरी की एक कुछ बना दो, रेलवे स्टेशन बना दो. डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, यू नो.
So for example this one मैंने इसको कुछ instruction दिया था कि ये देखना, this is made out of text, this is not a real obviously. And अभी आपको याद होगा जब मैंने आपको इमेज दिखाया था कि 2022 में बहुत ही क्रूड सी इमेज बन रही थी, 2000 अभी एकदम पूरा एक्यूरेट हो गया, वीडियो में सेम चीज अगले साल तक हो जाएगा, अभी क्रूड दिख रही है, इट विल बी सुपर लाइक खुद की मूवी बना सकते हो, यू कैन, जैसे अभी कार्टून इमेजेस तो आप देखो ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल है. If you look at cartoon images, ट्विटर पे थ्रेड आते हैं ना हॉलीवुड इज इंटरवल, वो ये वाला है. ये देखिए, this is a cartoon image which is as good as a real cartoon, no? This is made using text. मैंने कुछ लाइन टाइप किया था, a busy Indian railway station, vendors and passengers walking, sunlight streaming in, Ghibli aesthetic animated, बस यही लिखा हुआ. And I got this. अभी कुछ सेकंड का है, obviously आगे चल के will be able to make 15, 20, 30 मिनट का content using this technology. So this is video, and अभी जो हमने वीडियो दिया था वो बन गई, हाँ बन गई. So we made this, okay? So we made this live. In few seconds we are able to make this, right? You can download and pretty much do whatever you want with it. Then there is an app called you can make music, all kinds of music in any language of your choice. नुकसान बहुत सारे हैं frankly speaking. So just like any if you can be quiet please, so that we can take questions also. So gentleman is asking what is, sorry, हाँ misuse तो is like immense. For example, cyber security will be in deep trouble because of AI, because imagine the kind of data you can generate. अभी recently पता क्या हुआ था, हांगकांग में there was this call between two companies. एक साइड में CFO उनकी टीम थी, दूसरे साइड में they thought that it's their client. Every person in the video was a deep fake person, and this CFO ended up transferring some millions of dollars because normally होती नहीं, मीटिंग में डिसाइड हो गया करते हैं, पता चला कि सामने वाले लोग सारे रियल थे ही नहीं. It was all deep fake. And today the technology is there. Again, you can get in a video call and your face will be such you can't identify. So yeah, everything. So dangers तो देखिए बहुत ज्यादा है. In many ways there's a lot of danger in. So imagine, let's say this kind of tool goes into the wrong hands, जो criminal minded होते हैं, terrorist लोग जो होते हैं, can you just imagine how bad it can get? So obviously there's a lot of risk involved, huge risk involved. But anyways, coming back to the presentation, जिसमें so some entertaining tools. One very interesting tool which you folks will be very happy to use, I think in 6 months time, is getting जो पुराने old grainy photos होते थे, those will all get improved very quickly now. So this is a very old photo, but it has been reconstructed using AI. So all of our older pictures and all, you will be able to make good quality version of. कलर भी तो हो जाता है. कलर भी हो जाता है obviously. अभी तो एक वीडियो थी मैं दिखा रहा था, तो there is a tool called Magnific. अभी नेट ना बहुत, I think दरवाजे बंद करने से नेट का इशू हो रहा है शायद. So net is super slow, but otherwise you can. So I'll give you one example here. कनेक्ट कर देता हूं मैं भी मेरा. So जैसे ये इमेज है, right? So improvement करने के बाद it got upscaled improvement. So you can do it in so many ways. So this is one tool जिसका I think this is a good image to understand this from. कि this was the image पहले, then now you can get crisper, sharper images using AI. Then there are tools जहाँ पे you can make songs, and obviously this tool will also keep getting better. So God knows what will happen to the music industry, but I'm just giving you a demo of what is possible right now. So I think create करने में तो time लगेगा, so I'll quickly tell you some of the images या songs which are there. So essentially यहाँ भी वही है, you have to write कि मेरे को इस तरह का गाना चाहिए, इस टाइप का हिप हॉप चाहिए या भंगड़ा या पंजाबी, whatever. So background music चाहिए या किसी तरह, you can change the lyrics, so आपके lyrics में गाना हो जाएगा. So all those things will happen. Okay, so that is there. इसको आप लोग जरूर नोट करें. This is a platform called, there is an AI for that. So it's a directory basically. Yellow page होती है ना, yellow page
इस येलो पेज जहाँ पे जो भी आपको काम है, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग, तो उससे जुड़ी जो भी, जैसे वीडियो एडिटिंग के 56 ऐप हैं इसके पास, उसमें से ऑब्वियसली कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, बट एटलीस्ट आपको किसी से पूछना नहीं है कि इस काम के लिए मैं किसके पास कौन सा टूल यूज करूँ. यहाँ पे जस्ट कम एंड जस्ट से योर रिक्वायरमेंट एंड इट विल गिव यू ऑल द टूल्स. सो वन प्लेस में यू कैन गेट एवरीथिंग. ओके एंड ओके okay, yeah, so I'll just come to now to the last 5-10 minutes of things which I had for you. वेबसाइट कौन सा है जो आपका इमेजेस वाला? Images, एक तो चैट जीपीटी में मैंने दिखाया, एक मिड जर्नी है बट इट्स अ पेड टूल. जर्नी के ऊपर तो पूरा बहुत ऑफ वर्ड्स और अजीब सा स्क्रीन दे रहा है. Oh, that is because even today, no, it has been made by some youngsters. तो वो लोग डिस्कॉर्ड में यूज कराते हैं. So जैसे ये डिस्कॉर्ड है, so ये जैसे दिस इज अ मिड जर्नी इमेज, यहाँ पे you have to be on Discord mid journey के लिए, but I think just a matter of few months वो normal website पे आ जाएंगे because now they have become very big. No. ChatGPT paid version will allow you. हाँ, otherwise you can go to DALL-E. It's a different tool. DALLE. वहाँ पे you can go and make images. कुछ images free होते हैं. अच्छा, एक और चीज इसमें, अगर आपके पास Microsoft है तो Microsoft Copilot में तो सारा ही फ्री है. पूरा ChatGPT 4 भी फ्री है, DALL-E भी फ्री है, सब कुछ फ्री है. So that you can use. ये ऑफिस 365 में भी आएगा. जैसे कि मैंने आपको गूगल में दिखाया, तो आप 365 में इनफैक्ट अनाउंसमेंट तो हो गई है कि आने वाला है. So just a matter of few days or weeks में आप देख सकते हैं. तो ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट अलग है, ऑफिस 365 No. ऑफिस के अंदर, so पावर पॉइंट के अंदर में कोपायलट होगा, MS वर्ड, MS एक्सेल के अंदर में कोपायलट होगा. जैसे यहाँ देखिए ना, ये एक्सेल शीट है ना, दिस इज एन एक्सेल शीट. नाउ एक्सेल शीट में यहाँ पे देयर इज अ एआई. जैसे जो शेयर पॉइंट और ये सारे ऐप्स हैं वो हाँ, सारे कोपायलट में. जैसे दिस इज अ गूगल शीट. अब गूगल शीट में यू कैन गो एंड क्रिएट, कह रहा है कि लेट्स से क्रिएट अ शेड्यूल फॉर टैक्स पर्पस. टैक्स शेड्यूल कुछ होती है ना, कब कौन सा डेट में कौन सा टैक्स भरना है. क्या बोलते हैं उसका टर्म क्या है? ड्यू डेट शेड्यूल. ड्यू डेट शेड्यूल फॉर टैक्सेस इन इंडिया. ओके, सो आई मीन एक्सेल, बाय द वे, दिस इज नॉट ChatGPT, दिस इज एक्सेल. एक्सेल के अंदर में यू विल बी एबल टू क्रिएट अ टेबल एंड स्टफ एंड यू कैन इंसर्ट इट इनटू द एक्सेल शीट. टैक्स तो बहुत वाइड टर्म हो गया. आ गया ना? इनकम टैक्स April 15, corporate tax March 15, excise tax various dates because of state specific, and you can obviously ask it further to detail it more, right? So all of this is coming. So it's just a matter of you now getting comfortable with it, and getting this thing integrated in your workplace. So okay, so this is mid journey. Now I'll come back to what the last 10 minutes, so to say, which is little bit on the future. Okay, and I'll be a little fast here. I think we are also running out of time. So one of the things is because I keep studying this thing so much that I finally decided that this is one area जहाँ पे there's a huge requirement for things to get transformed. Reason why I'm taking Shanu Bhaiya's help to register my own firm and help a lot of people to do this technology transformation in the first place. शैलेंद्र, मैंने कभी बोला ही नहीं. So शैलेंद्र जी जो है, he is helping me make my own firm so that I can do this for different small and big companies, इस तरह के technology transformation. So the topic was there's some more things which you should know. So this gentleman here is called Alan Turing, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है called Imitation Game. एंड अगर आपने एप्पल की लोगो देखी है तो आपने देखा होगा एप्पल के लोगो में एप्पल हमेशा बिटन होता है. उसकी स्टोरी ये है कि ये जो एलन ट्यूरिंग थे, इन्होंने फॉर सम रीजन ही हैड कमिटेड सुसाइड बाय बाइटिंग ऑन पॉइजनस एप्पल, साइनाइड the apple because of something in his life. So because he was such a genius and Steve Jobs उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने एप्पल का लोगो उसके मेमोरी में उसको उन्होंने मेमोरी में बनाया था. So what Alan Turing had told, Alan Turing was also called the father of artificial intelligence. So उन्होंने एक टेस्ट एस्टैब्लिश किया था called Turing test, and very important for all of us to know.
तो ट्यूरिंग टेस्ट ऐसा होता है, एसेंशियली एक टीचर होगा, वो एक कमरे में बैठा है एंड दो और कमरे हैं जिसमें एक स्टूडेंट है और एक मशीन है, एंड द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स, बट टीचर को नहीं पता कौन मशीन है और कौन ह्यूमन बीइंग है। सो एलन ट्यूरिंग का कहना था कि एक ऐसा टाइम आएगा हिस्ट्री में जब इट विल बी इम्पॉसिबल टू नो द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम अ मशीन और द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। जिस दिन वी विल रीच दैट, तो उस दिन ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाएगा एंड वी विल हैव रीच्ड AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो अभी का अभी जो टेक कम्युनिटी वो डिवाइडेड है। सम आर सेइंग कि ट्यूरिंग टेस्ट पास हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट पास होने में शायद 2-3 साल और लगेंगे, बट 2030 के पहले ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाएगा। सो वी विल हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस व्हिच ऑब्वियसली विल हैव implication on every one of us. So one of the gentleman was asking what is the downside of AI. One downside is हमारे जॉब्स बहुत चेंज हो जाएंगे। There's a softer way of saying कि बहुत लोगों के जॉब चले जाएंगे, which is bound to happen. It's bound to happen. But obviously, the good thing is the moment you move away from your job, you'll have many thousands of new kind of jobs शायद अभी exist भी नहीं करते। जैसे prompt engineering, जैसा I was telling you, AI based video maker, AI based content creator, AI based financial analyst. So new kind of jobs will come, but obviously traditional job जैसा हम कर रहे हैं, वो 4-5 साल में नहीं रहेंगे। So it's better to get prepared for it. For your own firm, for your clients, it's better to be aware of this. So what's going to happen is कि human intellect जो है obviously linear मैंने बताया था, and we are entering exponential phase. So इसको singularity भी बोलते हैं। A point will come when machine intelligence will be higher than human intelligence. So we will essentially initially कैसा होगा कि AI आज के दिन में कैसा है ऐसा है, देखिए, it's like a dumb human being, but very soon you will have AI which is equivalent to an Einstein level intelligence. So again, how do you mentally prepare for that world? Is it speculation? मेरे से पूछेगा तो it's not a speculation. This is going to happen. So how do you prepare? How do you train yourself? Is something not to be scared about it, but is essentially होगा। देखिए, कोई भी कितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, we have always adapted. So we'll adapt to this also. But the thing is, in this case, we have to try to adapt faster. Okay, so essentially, to sort of close. So essentially, what's happening is, just I started the story that some alien sort of intelligence coming. So ASI, AGI, those will be that alien intelligence. Two options: to panic or to celebrate, or maybe to be in the middle. थोड़ा सा panic भी करना है, थोड़ा सा careful भी रहना, थोड़ा सा सीखना भी है. Some good news is across people who are building technologies. For example, this fellow, he's building a very unique technology जहाँ पे you can wear a device which will be your AI companion पूरे lifelong. So इसका term है called customized learning. Very great for your kids, also good for you. What it will do is, जैसे मान लीजिए taxation subject है या take any other subject, GST is a subject. So initially it will talk to you and ask कि आपको कितना पता है. It will measure कि अच्छा आपकी knowledge यहाँ पे है. Then it will start giving you incremental knowledge कि अच्छा आपको इतना पता है. जैसे मान लीजिए अलजेब्रा में आपको बाइनोमियल पता, आपको ट्राइनोमियल सिखाएंगे, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, आपको कैलकुलस भी सिखाएंगे. तो स्टेप बाय स्टेप, एंड दिस विल हैपन टू यू, दिस विल हैपन टू योर किड्स. गुड न्यूज इज कि फॉर किड्स इज ऑब्वियसली अमेजिंग, बिकॉज आप सबके पास एक अमेजिंग, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर होगा अपने बच्चों के लिए. बट यू शुड ऑल्सो थिंक द सेम फॉर योरसेल्फ. कई बार ना हम सोचते हैं हम तो पढ़ाई लिखाई हो गई, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी आप जीरो पे आ चुके हो. सो यू हैव टू अगेन sort of, because of technology, you have to again start learning. But yes, with this technology you can really get to the top level of knowledge in your field. So क्योंकि ये जो डेटा है, ये सारा देखिए पास्ट का डेटा भी ट्रेनिंग हो रखी है. So the reason why it is saying the first 10,000 years of human history was training for the next 10,000. अब तक जो भी AI कर रही है हमारे डेटा पे ही ट्रेंड है. So obviously it will help us improve our own knowledge. Again, this person here is a very respected, one of the most respected. Tesla के चीफ इंजीनियर थे, अभी now he is working for OpenAI. तो इनका कहना है कि जैसे हर घर में कंप्यूटर थी, उसी तरह हर घर में LLM हो गई. इनका ही ट्वीट है, it's not mine, इनका कहा हुआ है. Reason why I was telling you कि आप लोगों को अभी ऑलरेडी सोचना शुरू करना चाहिए कि how can you have a local LLM of your company. This is going to happen, but it's good to be थोड़ा सा ahead of the curve. And typically it is being said कि the first truly intelligent machine will be humanity's last invention. कि उसके बाद हमें शायद इन्वेंशन और नहीं करेंगे. कैसे करेंगे आप जब आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक चीज़ कुछ है और वो बिलियंस में है,
then obviously your strategies will change. So ideally you should want to make full utilization of it. So two big things you will keep hearing again and again, because some of you will be working on costing and stuff. So that we are going to see a change of economy as well. So two things will fall. One is the cost of intelligence. ChatGPT is 2,000 per month, and it is as qualified as many of us here in the room. So 2,000 per month obviously is very cheap cost for that intelligence. No, in the same way with robotics, we are seeing that the cost of manual labor will also sort of go down in a very significant way. I don't have time, otherwise I would have played a video where Bill Gates and Sam Altman are discussing this very topic. So what will be the implication of this two things in your business? How do you change your transform your business to make full utilization of this? Because things will get more efficient. Now it will be a matter of how and where you want to implement that efficiency. This was the video clip. I'm not playing it. We're in little short of time. So essentially, what I'm saying is you should leave the hall thinking, how do you see AI as a technology where human beings and AI can collaborate and get to higher economy, higher GDP for the country, get more profitability for yourself. Very interesting quote in a very beautiful way to understand automation. This is an entrepreneur here. He has said that automation means not having to do anything twice. कुछ भी चीज को दो बार नहीं करना है. Automation with the internet means not having to do anything that anyone else has already done. किसी ने कोई कर लिया, we just have to repeat that. So आपके लिए क्या बच जाता है in an AGI field? 2-3 साल बाद, what will you do as business leader? Your creativity or your judgment, those are the only two things which will be unique to you. So that's what you'll have to focus on. Everything else, and start thinking of it from right away. Everything else has to get automated, which means machines should do all the boring or the manual or the repetitive task. You should only do the creative part of it. So, and which will eventually lead to students, workers, and entrepreneurs becoming 1,000 times more effective. I will not go into this. This is a little technical. Those of you who are interested in technology, do study about Kardashev scale. It essentially describes how economies change. Large level, macroeconomic level पे कैसे changes आती है. It's called science में इसको Kardashev scale से measure किया जाता है. Today we are at 0.76 in that scale. Idea is to move to 1, then 2, then 3. So it's an interesting topic. किसी weekend में आपको time मिले जरूर पढ़े. It's amazing thing to know about. I'll end by saying that this is essentially the beginning. Okay, thank you. Thank you. The scanner is so that if you want to get in touch with me, you can. Dear friends, Shabbir is not from our fraternity. So before giving vote of thanks, I would like to say if anybody wants to give testimonial, like anybody wants to say how was the session and how words for Shabbir. AI, I think AI वैसे एक बड़ा interesting topic है, and I think Shabbir has done a great job explaining us how things are working, and I'll just be supplementing to what you have exactly said कि how exactly, क्योंकि क्या है कि आपने अपना technical बताया from this aspect जो यहाँ से professional है ना, तो वो actually they were more keen into understanding कि how to deep down level they can understand this. So I'll just be supplementing, taking 2 minutes of your time. So let's suppose if we give an example, so Bhupendra sir might be looking ChatGPT as if how can I grow my practice? वो वैसे what new areas of practice can come into picture. Raghuveer sir भी कि वो एक TCA के ऊपर हर बार एक डालते हैं अपना कि how things are going, and most likely वो इस बार भी डालेंगे. But अभी तक तो वो क्या कर रहे थे कि he was thinking and then writing each and every word of it. Now what he can do is ChatGPT पे जाके अपना पुराना वाला मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दिया और लिख दिया कि ये मेरा इस बार का है, ऐसा बना दो, and it will be able to do that. For example, furthermore, जैसे let's suppose हमारे कोई MC का सर्कुलर आया, हमारा कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोई सर्कुलर आया, we can upload that. Yeah. I am been doing that. We can upload that. हम लोग निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास कोई असेसमेंट ऑर्डर आ गई है, कोई नोटिस आ गया है, we can upload that and ask कि इसके अंदर क्या मैं ग्राउंड्स फ्रेम करूं, क्या इसके अंदर प्रोबेबली प्रॉब्लम्स हैं,
जो वो दैट्स शुड आई लुक इनटू, इट कैन एक्चुअली टेल दैट। तो वो चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वी कैन इनफैक्ट अगर आपने रिटन सबमिशंस आपके बना लिए हैं या रिप्लाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट बना लिया है, तो इट कैन हेल्प यू इंप्रूव दैट, इनफैक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द बिट। मैंने एक कल जो कस्टम जीपीटी वाली बात है, कल मैंने कस्टम जीपीटी बनाया ऑन सेक्शन 153 कि मैं सिंपली एक नोटिस या असेसमेंट ऑर्डर ही डालूं और मुझे टाइम लिमिट के हिसाब से बता दे कि वो, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो असेसमेंट ऑर्डर मैंने चढ़ाया था उसके अंदर मैंने वो टाइम लिमिट से बाहर था और मैंने वो ग्राउंड नहीं ले रखा था। आई विल बी रेजिंग एन एडिशनल ग्राउंड, बट यस दिस इज टू एन एक्सटेंट हाउ वी कैन यूज इट। जो हम लोग रेगुलर हमारी इनफैक्ट एमसीए के अंदर हम बोर्ड मीटिंग्स बनाते हैं और वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, एक क्लॉज को देखना। तो एग्जैक्टली आप अपनी बोर्ड मीटिंग को ही यहाँ चढ़ा सकते हो कि ऐसे ये फॉर्मेट है जिसके अंदर मेरी बोर्ड मीटिंग चलती है और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, आप एनालाइज कर लो दोनों चीजों को, अब मेरे को एक बोर्ड मीटिंग बना के दे दो। तो इट कैन एक्चुअली डू दैट, वो भी वो कर सकता है। So just so thank you for your time and thank you Shabbir for this wonderful presentation. Anyone else? इसमें जैसा भी देवांग में कि आप अपना डाटा आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा फॉर एनी एनालिसिस। तो एक्सेल हो, पीडीएफ हो, ऑल एक्सेल पीडीएफ या कोई भी असेसमेंट ऑर्डर हो या हो, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एक हमारे यहाँ क्लॉज होता है कि आप अपना डाटा जो है वो कहीं और नहीं दे सकते। तो ये जैसे पेड चैट जीपीटी है या जो अनपेड है, फ्री है, उसमें इसको ये कैसे टेक मतलब हम कैसे टेक केयर करेंगे? The point is there. Yeah, sure. That's a good question. तो अगर सी एज ऑफ नाउ if client हैं जिन्होंने आपने कुछ क्लॉज साइन कर रखा है, then ideally I will say don't do it. Don't upload that data right now because वो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग के लिए जा सकती है। क्योंकि आपने जो बताया ना कि सब ऑटोमेशन हो गया, करेक्ट, दूसरे लोगों का भी किसी ने कुछ किया तो उसका भी ऑटोमेशन वो ट्रेनिंग तो चल रही है ना, So, तो वो आपका असेसमेंट ऑर्डर किसी और के लिए भी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, तो करेक्ट। ये हाउ दिस उसका सॉल्यूशन इज, सो वी आर लिटिल अर्ली इन दिस टेक्नोलॉजी फॉर श्योर। इसका सॉल्यूशन विल बी व्हिच आई वाज टेलिंग अबाउट योर पर्सनल एलएलएम, जो आपका एंटरप्राइज एलएलएम जिसको हम कहेंगे। सो इनफैक्ट मॉन्डेलीज में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन, द कंपनी वेयर आई वर्क, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन। ऑलमोस्ट ऑल अदर कंपनीज, बिग कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट। स्मॉल फर्म्स के लिए आई थिंक इट इज टू एक्सपेंसिव राइट नाउ, बट जो ओपन सोर्स मॉडल, जो मैंने इसीलिए ओपन सोर्स का बार-बार जिक्र किया था, बिकॉज ओपन सोर्स मॉडल के थ्रू you can make it for I don't think it will cost a lot of money to create because code